Hello friend, my name is Ashok Kumar Mehata. Today I will discuss about GATE. GATE is graduate aptitude test in engineering. So GATE की प्रिपरेशन हम बेसिकली दो पर्पस के लिए करते हैं. फर्स्ट वन इज PSU, सेकंड वन इज MTech. पहले अपन बात करते हैं PSU में बहुत सारी कंपनी आती है, लाइक महारत्न कंपनी, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनी. तो मैं यहाँ पर एक दो कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक IOCL, BPCL, ONGC. ये सिर्फ एग्जांपल है, और भी बहुत सारे PSUs है जिनमें की अच्छा पैकेज है और इनमें मैकेनिकल की सीट्स भी काफी बहुत होती है और पैकेज अराउंड 10 लाख पर एनम. इसके अलावा इसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस. और ये था PSU के बारे में. इसके बाद अपन बात करते हैं MTech के बेसिकली दो पर्पज है. MTech करने के बाद में यू कैन गो फॉर टीचिंग और अदर वन इज R&D जो है, हर कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो. उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसको रिसर्च डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए R&D डिपार्टमेंट होता है. इसमें भी MTech के बाद में रिसर्च स्कॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज अबाउट GATE. माय टॉपिक इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. Principal stress and strain. So this is the most important topic in strength of material in GATE as well as IES. So aim of this chapter is to derive the expression and to find out the value of principal stress, major principal stress, minor principal stress and maximum shear stress. So maximum shear stress at a point, remember this thing, at a point, because at a point there are infinite plane. So we will find out at a point in a component subjected to biaxial state of stress. So first we take a component. It may be beam or bar subjected to biaxial state of stress. So biaxial state of stress in which stress in one direction, it means x y, if stress in x y z डायरेक्शन में है, तो x y z में से किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेस अगर जीरो होगा तो ये बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन होगी. रेस्पेक्टिवली इसमें जो है, अगर सिग्मा जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस जीरो है तो शियर स्ट्रेस एक्स जेड, शियर स्ट्रेस वाई जेड will also be zero. So this is a condition for biaxial state of stress. Now we see the definition of major principal stress, minor principal stress and maximum shear stress. When a beam or bar, a component is subjected to biaxial state of stress, at a point there is infinite plane. So at a point the plane which have maximum value of shear stress, that will be the major principal. That will be our major principal plane, and the plane which having minimum value of stress, that will be the minor principal stress, and the plane which having maximum value of shear stress, that will be our maximum shear stress plane. Important point यहाँ पर ये है कि जो ये प्लेन होंगे, सभी प्लेन एक पॉइंट पे होंगे. एक पॉइंट पे अपन डिस्कस कर रहे हैं. ये जो पॉइंट होगा वो होगा क्रिटिकल प्लेन, क्रिटिकल पॉइंट. डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट व्हाई वी यूज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस in design by using of various theories of failure. For design we use various theories of failure. By the help of these formula we find out the values of these stresses as critical point. So now let's derive the expression for major principal stresses and maximum shear stress. So इसमें मेन जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी अपन ये डिफाइन कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे है और एक पॉइंट पे इनफाइनाइट प्लेन होंगे. So from a beam we take a cross section, bar beam anything. So stress in x direction will be sigma f. We taking a biaxial state of stress condition. In y direction sigma y, it may be compressive, tensile, any type of nature, sigma x. Shear stress of fy. Sigma y is shear stress in y direction. Sigma x is shear stress in x direction, and tau xy is these are the stress in x direction, stress in y direction, x direction. This is the shear stress in xy plane. So now to derive the expression for principal stress and principal stress, we take a cross section here. We take a plane here at an angle of theta with x-axis. So for this plane we have taken shear normal stress sigma n and shear stress tau s. So now to find out relation in sigma n normal stress and the stresses are given here. We have to resolve all the forces in x and y direction. By using of equilibrium, we find the relation between them. So I am directly writing here the relation for sigma n, which is normal stress on the oblique plane having theta angles with x-axis in anti-clockwise direction. अपन इसमें अभी डायरेक्शन भी देखेंगे. डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, शियर स्ट्रेस होगा, जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो रिलेशन आई एम डायरेक्टली राइटिंग हियर सिग्मा x प्लस सिग्मा y by 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Relation for shear stress on oblique plane sigma x minus sigma y by 2 minus of sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. Now we will see the direction. So stress on the plane maybe this may be tensile or compressive. So tensile we will take tensile as a positive and negative जो होगा compressive को अपन negative लेंगे. और जो shear stress जो है, shear stress अगर x फेज पे क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव, और x फेज क्लॉकवाइज. और अगर x फेज पे अगर अपन देखें ये वाला शियर स्ट्रेस
ऐसे होता और this is toward this, then tau xy will be, this will be negative because ये जो है x फेज पे शियर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, उस कंडीशन में अपन x फेज पे नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So this was the sign convention. साइन कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्वेश्चन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे तो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन को दिया होता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई शियर स्ट्रेस और एंगल दिया होता है, तो अपन डायरेक्टली रख देते हैं वैल्यू और आंसर तो आ जाता है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप क्वेश्चन में पूरा डायग्राम बना के, जैसा मैंने अभी बनाया पूरा डायग्राम बना के पूरे स्ट्रेस यहाँ पर दिखा के और साइन कन्वेंशन को पूरा ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और अगर आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे आप उसमें भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको. और वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अगला क्वेश्चन अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से करते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उसे प्रॉपर तरीके से करेंगे. नाउ वी विल सी साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन. ओब्लिक प्लेन पे जो है साइन कन्वेंशन को अपन कैसे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है, वो इसी से डिसाइड होगी. सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. तो जो इसका जो ओब्लिक प्लेन है उस पे अपन अभी देखेंगे कि इस पे जो है अपन साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं. इसमें जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसका साइन कन्वेंशन सेम रहेगा जैसा कि अपन ने देखा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का. अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा. और अब अपन बात करें थीटा, हाउ टू फाइंड आउट थीटा विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इसका सिंपल फंडा ये है कि एक्स एक्स से ओब्लिक प्लेन, एक्स एक्स से ओब्लिक प्लेन हमेशा जो ये एरो है ये हमेशा एक्स एक्स से शुरू करना है और गो टुवर्ड ओब्लिक प्लेन. अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अगर एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज थीटा विल बी नेगेटिव. फॉर डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी क्लॉकवाइज, देन थीटा विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज थीटा विल बी नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये इन दोनों का साइन कन्वेंशन हो गया थीटा नॉर्मल. अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस ऑन द ओब्लिक प्लेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अपन देखने के लिए क्या करेंगे, इस प्लेन को अपन यहां से कट कर देंगे और इसको इधर देखेंगे. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन ओब्लिक प्लेन. So here shear stress is given like this, arrow is this direction. So we will assume it. So we will take it. Shear stress will be ये वाला पार्ट लेंगे अपन. So shear stress will be here in anti-clockwise direction. So shear stress will take opposite to theta. So anti-clockwise direction shear stress on oblique plane will be, anti-clockwise direction give positive and theta will be shear stress will be negative in anti-clockwise direction.
शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सब इनके साइन कन्वेंशन हो गए। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन में जो न्यूमेरिकल करते हैं उसमें डेटा गिवन है दैट सिग्मा एक्स इज गिवन 100 megapascal, this is equal to 100 megapascal, this is equal to 200 megapascal, this is given compressive, this is again 100 megapascal, this is compressive 200 megapascal. Shear stress is given 50. Shear stress is given 50 megapascal. 50 megapascal. मेगापास्कल शियर स्ट्रेस इसमें गिवन जो है वो, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो है वो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि अभी बताया था, ये जो साइन कन्वेंशन इन दोनों के है वो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, जो सिंपली वी कैन राइट ये टेंसाइल है पॉजिटिव, और सिग्मा वाई नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज कंप्रेसिव इन नेचर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यहाँ पर एक्स फेज पे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक्स फेज पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। सो शियर स्ट्रेस तो एक्स वाई विल बी नेगेटिव 50 megapascal। अगर ये पॉजिटिव होता है इस फेज पे तो पॉजिटिव लेते, लेकिन ये एक्स फेज पे सॉरी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन ये एक्स फेज पे एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे इसको। Now we can find the value of by this formula, normal stress on oblique plane and shear stress on oblique plane. We can find out this value, shear stress. So I am not writing the formula, directly putting the value sigma x is 100 minus of, इसको भी यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस डिवाइड बाई 2 माइनस 100 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस cos x is given minus sin 2 theta. Here theta is given, I think sorry I forgot to write that theta is given 30 degree. Okay, so theta oblique plane को अपन देखें तो थीटा x एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो 30 डिग्री गिवन है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो 30 डिग्री पॉजिटिव। Now by putting this value of theta, we will be putting the value of theta 60 degree and 60 degree. So normal stress on oblique plane comes out to be 68.3 megapascal. This is positive in nature, that's why it will be tensile होगा। और इसके बाद में वन फाइंड आउट करते हैं शियर स्ट्रेस ऑन oblique plane, that will be minus of sin 60
प्लस -50 cos 60. So all sign convention are correct here. So shear stress will be on oblique plane plus 1049 megapascal. तो ये भी जो है 10 में आ रहा है और इसका साइन जो है अपन ऐसे नहीं देखेंगे जैसे ही नॉर्मल टेंसाइल की तरह देखा था, इसका अभी जो बताया था उस तरीके से देखेंगे। ये इस डायरेक्शन में गिवन है अपने को। तो टू फाइंड आउट साइन कन्वेंशन फॉर shear stress on oblique plane we follow same method, that is anti-clockwise direction. So shear stress will be positive. Shear stress will be positive in anti-clockwise direction. Plus here we cannot define sign earlier. By taking the sense of direction, we will define the sign positive 1049 megapascal. So आपने देखा कि साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद में जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली वैल्यू रखने के बाद में आप आंसर आ जाएगा।